Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. So this is the book, The Secret Life of Water. और इस पे basically the already discussed Dr. Lorenzo जिनका cluster of water है वो discuss होगा, and then Dr. Rupert Sheldrake उनकी morphic field. This is the new one, Harold Saxton Burr कि वो life field के बारे में बात करते हैं. And this is the same one जो chapter 1 में था कि what is the principle of Hado. You can explain it in vibration. Number 1, number 2 resonance, number 3 similarity. और उन्होंने human blood की example दी हुई है इधर. And then consciousness के ऊपर time and space का rules apply नहीं होते. And then are the crystals receiver जिस तरह हमारी body hairs हैं or not. एंड फिर ये क्रिस्टल्स हैं, ये चैप्टर के 5 के आखिर में है, बट दीज वर रेलिवेंट, सो आई जस्ट एडेड इट हेयर. एंड आपने जब क्रिस्टल्स की पिक्चर्स आएंगी तो उस पर जस्ट ट्राई टू फोकस कि आपको कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप नजर आ रही है. और क्रिस्टल्स आएंगे स्प्रिंग वाटर, डैम वाटर, रिवर वाटर, स्ट्रीम, लेक, रेन वाटर. और नेचर के 5 रिलीजन्स के EM जो हमने पढ़ा था डॉक्टर ट्यूरो का, अफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिक्विड बैक्टीरिया. और फ्लावर सेंसेस जो हमने पढ़े थे कि फ्लावर की वाइब्रेशंस होती हैं, अरोमा ऑयल्स के क्रिस्टल्स, लव एंड थैंक यू 3 डिफरेंट लैंग्वेज में. और एट द एंड जस्ट अ क्वेश्चन, जब भी आपको ज्योमेट्री नजर आती है, जब भी आपको साउंड सुनाई देती है तो एक वेव बनती है, एक वाइब्रेशन होती है. सो इज देयर अ लिंक के फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री ट्रायंगल, इसको हम नंबर में 3 लिख सकते हैं, 3D 2D डायमेंशन, और फिर ये एक वेव बना सकती है. एंड वी नो एवरीथिंग जो अलाइव एंड नेचुरल दैट इज वाइब्रेटिंग. So let's move on. Like always, be mindful, ittaqullah, have an open heart, ears, eyes, and mind. Open your mind to new perspective. Do your own research. Make your own mind and be conscious about it. जो मीडिया दिखा रहा है वो ही आपके व्यूज हैं या आप खुद से सोच रहे हैं. And it's based on the book and books and online sources, so done in a good faith, and may contain margin of error, so take the good and leave the bad. And this is the table of content. So chapter 4 है and last में से crystal वाला part है. Chapter 5 was pretty important. इसमें आपके पास herb plant आएगा, so इसलिए मैं mix नहीं कर रही. So chapter number 4 का part A, B और C में divide है. First, it's general, the intro, the Hado inexplicable, जिसको explain नहीं किया जा सकता या it's hard to explain. Hado को आपने याद रखना है, it's vibration. And it starts with the shaman story कि किस तरह flow life में, चाहे आप EI के point of view से देख लो, emotion, feelings जो कि एक energy है आपके अंदर, आपके अपनी thoughts आपको बीमार कर सकती हैं, जब आप उनको words के through बाहर निकालोगे, वो तो हमें पता है कि water can absorb your messages. Dr. Lorenzo आएंगे और फिर वो science की बात होगी. And the second chapter is more about photographic is subjective science और किस तरह हर चीज science के through explain नहीं की जा सकती. Like for example, रूह and consciousness. And number C, जो C है third part, ending of this chapter, that is also about the morphic field, Dr. Rupert Sheldrake की, और उसको blood के साथ किया हुआ है कि किस तरह 2 years पहले जो एक sample लिया गया था patient का और 2 years बाद जो करंट सिचुएशन है पेशेंट की, उसके विद रिस्पेक्ट टू उसका सैंपल चेंज हो गया था. अगर 2 साल बाद वो अब सिक है और वो पहले हेल्दी सैंपल था ब्लड का, तो अब वो सिकनेस में हो गया. सो व्हाट इज देयर दिस अनसीन वर्ल्ड जो हमें नजर नहीं आ रहा. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. Here he talks about कि एक shaman होता था and in New South Wales वाली side पे northern region of Australia. The writer is telling you the story in August 2002. So ancient tale, there was even shaman. Yeah, New South Wales में there was a mountain जिसके upper region में एक shaman रहता था and उसके जो bottom पे जो river था उसमें सारे river जो लोग थे they were pretty happy. तो shaman got the sick feeling जब हमें भी हो जाती है कि ये सब हर्ट क्यों है, तो उसने उस पानी को रोक लिया. तो जब उसने उस पानी को रोक लिया उसके पास अब फ्रेश वाटर रहने लग गया और जो नीचे था वो क्या कहते हैं सिर्फ ट्रिकल ऑफ वाटर जाता था, तो जिसकी वजह से वो वाटर फिल्थी होने लग गया, वो वाटर ब्लॉक हो गया. अगेन द फ्लो एंड स्टैग्नेशन कंसेप्ट, जब आप फ्लो के साथ रहेगा आपके अंदर का वाटर विच इज एन इलेक्ट्रिक करंट, और जब वो स्टॉप हो जाएगा तो फिर क्या होगा उसके साथ भी आप रिलेट कर सकते हैं. सो शामन ने वो इविल थॉट्स उस वाटर के अंदर डाल दी और वो जो हैप्पी नीचे ट्राइब रह रहे थे उसमें क्या कहते हैं अब वो सिक होने लगे, एक दूसरे से लड़ने लगे, बिकरिंग करने लगे, थीविंग यानी एक दूसरी चीजें चोरी करने लगे. सो दैट्स हाउ. तो जब वो स्टोरी नरेट कर रहा था एबोरिजिनल इन अगस्त 2003 में राइटर के साथ, तो उसने ये वर्ड यूज किया था कि वाटर
copied कि shaman ने copy की अपनी negative thoughts into the water, यानी one sentence copied into the water. So he was shocked कि किस तरह generation से story आई, and there is this term जो अब हमारे पास सबूत है कि वाटर में मेमोरी आपकी होती है. सो द पॉइंट हियर इज कि वाटर को फ्लो करना चाहिए, वाटर को स्टैग्नेशन नहीं करनी चाहिए, और सेम इज गोइंग विद द ह्यूमन, बिकॉज आपके 6 months में आपकी बॉडी सेल भी बार बार फ्रेश हो रहे हैं, डाई हो रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं. एंड वाटर हैज दिस एबिलिटी टू रीड द एनर्जी, द वाइब्रेशन, द वाटर जो वो आपकी एनर्जी वाइब्रेशन को करता है, उसके बाद वो स्प्रेड भी करता है उस वाइब्रेशन को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे. रिमेंबर द टाइम एंड स्पेस के रूल्स इसके ऊपर उस तरह से नहीं लगता है. उसके नेगेटिव क्या होगा, ईआई में आ जाए आपका जेलसी, ग्रीड, पावर, तो वी हैव पावर. इन शॉर्ट वी आर वाइब्रेशन. जब तक हम जिंदा हैं, सो वी हैव द पावर कि आप अच्छी ब्लिसफुल चीज भी कर सकते हो और आप डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो. तो दिस इज द स्टोरी. और इस स्टोरी से जो वो कंक्लूजन निकाल रहा है वो ये है कि फॉर आवर एंसेस्टर्स फैंटेसी, साइंस, थियोलॉजी वर ऑल द वन, वर ऑल द सेम. So if we let's look the last century, 20th century, world wars, all this. So the conquer and division, ये फॉर एग्जाम्पल हम जो यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन में पढ़ते हैं, हर चीज को डिवाइड कर दिया गया है. बिकॉज बट आप कुरान में देखते हैं तो ये सारे सब्जेक्ट्स एक एंड दीज आर ऑल लिंक्ड. सो व्हाट डू यू से, हमें कंफ्यूज करने के लिए, हमें डिवाइड करने के लिए इन्होंने किया, और इज इट जस्ट अ नेचुरल थिंग? Or maybe nature was all in one, it's originating from the same source, or is it the artificial one जो division कर दिया? Just a question. इधर डॉक्टर लियो लोरेंजो का दोबारा आ जाता है कि उन्होंने क्लस्टर एक्स वाटर बनाया था, उनकी वाइफ सिक थी और हर तरफ से साइंस ने कह दिया था कि she doesn't have a solution, her time is उनकी डेथ का टाइम करीब हो गया. एंड ही वाज सक्सेसफुल. फिर वो अपना एक्सपीरियंस बताता है राइटर कि कि वो ही वाज प्लेइंग द गोल्फ, और फिर उसके एंकल में एक हुई, लिंपिंग स्टार्ट हुई, तो डॉक्टर लोरेंजो वाज कंसर्न और उन्होंने कहा ये वाटर आप अप्लाई करें. सो ही वाज स्केप्टिकल लाइक अस. तो ही सेड कि अप्लाई. उसने सोचा, द राइटर ने, कि भाई वाटर ना पेन को रिमूव कर सकता है ना ये हर्ट कर सकता है, तो अप्लाई करने में कोई मसला नहीं है. तो उसने वो अप्लाई किया एंड ही वाज शॉक्ड कि थोड़ी देर में उसकी क्या कहते हैं एंकल वाजंट हर्ट एनीमोर, देयर वाजंट पेन एनीमोर. So that's how writer की journey start हुई, and he started taking interest into that water. And फिर उसने कोशिश की, जापान में उस वक्त बहुत इंटरेस्ट था वाटर के अंदर, हेल्थ के अंदर, नेचुरल वेज जो आपके हैं वर्सेस मेडिसिन एंड डॉक्टर्स के. So he brought from USA Dr. Lorenzo, but that was failed because he was totally speaking in a scientific language. आम आवाम उनको वो चीज समझ नहीं आई, so that was a disaster. तो उसने फिर सोचा the writer ने कि how what is there, साइंस को किस तरह आम आवाम की लैंग्वेज में आप कर सकते हैं कि उनको समझ आए. सो ही सेड कि साइंस इज बेस्ड ऑन द हाइपोथेसिस, और साइंस के इंस्ट्रूमेंट्स, टेक्नोलॉजी को यूज करके हम उस हाइपोथेसिस को कर सकते हैं. दैट्स हाउ वो क्रिस्टल एंड फोटोग्राफी वाली चीज. एंड देन ही पुट अ क्वेश्चन कि भाई ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, टेक्नोलॉजी आप दूसरे केमिकल्स, मटेरियल्स को एनालाइज करने के लिए करते हो यूज, व्हाट अबाउट वाटर, व्हाई डोंट यू एनालाइज वाटर? एंड देन ही कॉन्टेक्टेड बैक डॉक्टर लोरेंजो कि कैन यू लुक फॉर अ डिवाइस जो एनालाइज करे वाटर को. एंड दैट्स हाउ द एमआरए डिवाइस, जिससे राइटर की रिसर्च स्टार्ट हुई. He started analyzing it and transferring the vibration of the water. So he talks about his 1987, किस तरह उसने 15,000 लोगों के साथ काम किया, and he found that there is an unseen world, a world of vibration, beyond this, and that is the key if you want to understand the world around you. And then he talks about, but we can't forget that not everything can be understood by the research or science. उनकी भी एक boundaries हैं, जिस तरह हमारी हर sense की limit है, हर चीज की एक limit है. And then he talk about कि जब water को frozen state में किया जाता है, same crystals will never appear twice, and there are no two snowflakes जिसके crystal exactly alike हो. And then he talks about कि जब आप water के crystals की, because एक sample की अगर 50 samples लेते हैं और उसमें से हर एक का crystal नहीं बनता, किसी का बनता है किसी का नहीं बनता. So he talks about, if that's so how do you choose one particular crystal photograph? So he talks about impossible because एक sample के 100 photograph crystals होते हैं. So he talks about encyclopedia animal में आप किस तरह एक picture लेते हो. For example, आपने dog की बात करनी है, तो आप एक dog की picture लेते हो, पर वो उसके सब आगे सब categories के dog को नहीं define करता. So that's how water photography
he choose certain set of circumstances. And then he talks, जब वो लेक से पानी लेते हैं तो वो उसको डिस्टिल नहीं करते, वो उसके ऊपर डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट करते हैं. बट जब टेस्टिंग इफेक्ट्स करते हैं वो ऐसे वाटर के ऊपर जिसके साथ बीकर के ऊपर वर्ड लिखा हो या फोटो अटैच हो या म्यूजिक हो, सो फर्स्ट दे डिस्टिल इट ताकि उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, और फिर वो उसको टेस्ट करते हैं. And then he talks about here the A part finished, the B part is photography crystal जो है, it's a subjective science. Here he talks about the simple freezing specimen कि किस तरह आप एक sample लेते हो, उसको 50 petri dishes पे syringe को use करके डालते हो, and then it's kept in -25 degree centigrade, और फिर आप crystal लेते हो उस picture का टेकिंग क्रिस्टल पिक्चर, आप उसको मेटल लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हो, एक एक करके 50 पेट्री डिशेस को उठाते हो, और वो क्रिस्टल 2 मिनट्स, सिर्फ यू हैव 2 मिनट्स, उसमें वो क्रिस्टल कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, वो स्वेल होता है, एंड दैट्स हाउ द माइक्रोस्कोप. और फिर उस क्रिस्टल्स की कैटेगरीज हैं डिफरेंट, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, हेक्सागोनल पैटर्न, रेडियल पैटर्न, लैटिस, इंडेफिनिट, कोलैप्स, और no crystal forming. This is the interesting where the momentum comes the law of, it's actually the uncertainty principle of quantum mechanics जो basically है उसको the principle that the momentum, which is the quantity of motion, and the position, number one momentum, quantity of motion, and number two is position of a particle can't precisely be determined at the same time. यानी जब आप देख रहे हो उस वक्त एक्सपेरिमेंट की कोई और वैल्यू होगी, और जब आप नहीं देख रहे तब कुछ और होगी, और वो उसकी बात करता है कि ये जो वर्नर हाइजेनबर्ग जर्मन फिजिसिस्ट ने कहा है, what is he talking about? So what he's saying is कि theory के each time you look at the experiment, so electrons and they move in a different way. The very act of observing results in a different movement of electrons. So एक तरह से ये ऑब्जर्वेशन आपकी इम्पॉसिबल बना देती है. वो कहता है जब इंसान की वो गेज देखती है तो उधर क्या हो रहा है, there is a world unseen and that needs light. So when electrons are exposed to light, the electrons get disrupted. So वो जो इस्लाम का कंसेप्ट भी इधर ला सकते हैं कि वो जो नजर लग जाती है, सो यानी आपकी अच्छी नजर भी है, बुरी नजर भी है, और फिर वो जो कहा गया है कि मर्द की नजर नीचे और औरत को अपना सारा प्रोटेक्ट करना चाहिए. सो अगेन गेजिंग वाली चीज भी है, समथिंग इज गोइंग ऑन इन द अनसीन वर्ल्ड, दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी, द गेजिंग द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स और मे बी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, सो समथिंग टू लुक. एंड एक और चीज वो इधर बताता है कि जो वाटर क्रिस्टल्स, जो क्रिस्टल्स की फोटोग्राफी है, उसमें ये भी डिपेंड करता है कौन सा इंसान उसके पिक्चर्स ले रहा है, उसकी पर्सनैलिटी का भी असर हो रहा है क्रिस्टल के ऊपर, वो इंसान क्या सोच रहा है, और उस वक्त टाइमिंग्स क्या है. हमें टाइमिंग्स का पता है कि बरकत वाला टाइम भी है, फॉर एग्जांपल इशा के बाद सो जाना जल्दी, हो तहज्जुद के वक्त उठ जाना, या कैलूला का टाइम. बरकत वाले टाइम का मतलब है कि कम टाइम में, एक इंटरप्रिटेशन ये, कम टाइम में आपको क्वालिटी स्लीप. और द लास्ट इन्वायरमेंट, ऑफ कोर्स इन्वायरमेंट का असर होता है, and that's why they talk कि genetics can be changed अगर आप अपना environment change कर लें. So let's come back. We know very little about what is going on in the world around us. और वो कहता है सेम गोज अबाउट वाटर, कि वाटर के ऊपर जब ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है हमें उसके बारे में बहुत कम पता है. अब वाटर के ऊपर 2 फैक्टर्स करते हैं. एक तो वही कि कहते हैं कि जो वाटर रिएक्शन करता है डिफरेंट पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी, ऊपर वाला पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन है जो बहुत अप्रिशिएट करने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह वाला है, ब्लिसफुल है, एंड सेकंड पर्सन है हु इज ऑल अबाउट नेगेटिविटी, एंगर, EI वाले इमोशंस ले आए, फीलिंग्स ले आए. सो जो पॉजिटिव वाला होगा उसका क्रिस्टल के ऊपर असर होगा, और नेगेटिव वाले की भी थॉट्स एनर्जी का इसके ऊपर असर होगा. और सेकेंडली तो जो 2 मिनट्स के लिए कैमरे का शटर होता है, तो शटर पे क्लिक करने से पहले बाद में बीच में क्रिस्टल अपनी शेप चेंज कर रहा होता है. सो अगेन द अनसर्टेनिटी अगर उधर है, एक्सपेरिमेंट्स में है, साइंस में है, सो ऑफ कोर्स आपको नहीं लगता आपकी लाइफ के हर ईच एंड एवरी सेकंड में अनसर्टेनिटी है. सो अनसर्टेनिटी इज ट्रूली अ फैक्टर इन एवरीथिंग इन आवर वर्ल्ड. And at the last वो B part के आखिर में कहता है कि water crystal photography might not pass definition of scientific ways, but there is a degree of uncertainty involved.
तो अनसर्टेनिटी आपकी हर जगह, इट्स नॉट लाइक अ ब्लैक एंड व्हाइट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इट्स मोर लाइक मर्की ग्रे वर्ल्ड जो ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में होती है, अनक्लियर एंड कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स. एंड सो इट्स जस्ट लाइक कि जो हार्डो एंड वाटर क्रिस्टल्स हैं, आपने एक पर्दे का कोना उठाया है, एंड देयर इज मच मोर टू फाइंड आउट. So the last part of the chapter 4 is about everything emits vibration. How could exposing water to a picture, a word, can possibly result in crystals that are so different from each other? So here he talks about कि जब water crystal से पहले वो experiment कर रहा था with क्या कहते हैं vibration machine, people were sick और उसके office आते थे, he used to provide consultation. So writer will test एनालाइज देयर वाइब्रेशन एंड रिकमेंड के आप वाटर ट्रीटमेंट करें. वाटर ट्रीटमेंट में वो क्या करता था कि फॉर एग्जांपल वो उन लोगों की वाइब्रेशन मशीन के थ्रू उधर करता था. फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट सिक है, वो उसके पास नहीं आ सकता, तो उसका नेम को लिख के वाटर क्या कहते हैं वाइब्रेशन पे शिफ्ट करता था, एंड ही गॉट टू नो. और इसकी एक स्कोरिंग मैटर था. इस चीज के रिलेटेड जो उसने एक्सपेरिमेंट्स किए वाटर क्रिस्टल स्टार्ट करने से पहले, हियर इज द बुक द ट्रू पावर ऑफ वाटर, आप उसके ऊपर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. एंड क्या कहते हैं बेसिकली इस चीज ने जो उसके 5-10 years थे उसमें उस चीज को प्रूव किया कि फोटो, आपका नेम, हर चीज की वाइब्रेशन है, So at the end फिर वो बात करता है कि there are not many people who are able to detect the vibration emitted by the photos. फिर वो अपने एक फ्रेंड की बात करता है कि वो उसने एक न्यूज़पेपर पढ़ा और उसमें एक तस्वीर देखी माउंटेन क्लाइंबर की, and he sensed कि वो climber is not alive anymore. So consciousness is involved here. There are people, maybe they are in less in number, but this works. This happen कि आपको पहले premonition हो जाती है और फिर बाद में आपको पता चलता है कि that was a valid thing. So it's hard to deny that's deeply buried human consciousness, and there are hidden energies, and perhaps it has link with our intuition to sense what has happened despite the barriers of time and distance. यानी आपका time and space वाले rules इधर apply नहीं हो रहे. And then he talks about कि जापान के ancient belief है कि each individual word had its own spirit. Every word इसकी एक अपनी vibration है, and which makes it possible for message to be transferred, and उसको एक कोने से दूसरी जगह transfer करता है और पहुंचा देता है. जिस तरह for example आप अगर thank you कहते हो या आप अगर क्या कहते हैं you are idiot कहते हो, तो water उस चीज को भी capture कर लेता है. फॉर एग्जाम्पल वो कहता है अगर आप कहते हो यू आर इडियट गुस्से से, सो आप किसी को बिलिटल कर रहे हो, तो डीपली फेल्ट करेगा. पर अगर आप उसे प्यार से कह रहे हो यू आर एन इडियट, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई छोटा बहन भाई है, सो कहते हैं दैट इज अम्यूजमेंट. सो देयर आर टू थिंग्स, one word but it's saying in a different tone. So in short, आप जिस way में बोल रहे हो, आप मेल हो फीमेल हो, उसका भी different vibration है. आपका of course gender, आपका किस mood में हो, EI apply करें इधर, और आप किस grammar में बात कर रहे हो, each and everything का water के ऊपर effect है. Here comes the morphic field, the famous Dr. Rupert Sheldrake. It has many definitions, but either just to revise, a human body has an auric field. आपके बाहर different auric fields हैं emitting from the heart. We know heart is much stronger than the brain. This frequency gives and receives beneficial information for the body with other humans within 6 feet radius of their field. आप receive भी कर रहे हो और क्या कहते हैं आप emit भी कर रहे हो. It's his famous book, The Science Delusion, The Science Set Free, जो साइंस ने हमें प्रोग्राम कर दिया है कि यही चीज और एक्चुअल नेचर में वो चीज नहीं है. So you can find that here. और फिर वो इसकी एग्जांपल देता है, there is another world invisible to our eye. Once an event happen, एक दफा एक चीज हो जाती है तो उसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं रिपीट होने के. So there is increased likelihood it will happen again. For example, unfolding history. अगर आप में से कोई हिस्ट्री पढ़ने वाला है, you must know कि there is a pattern, और आप फिर उस चीज को नोटिस करना स्टार्ट करते हो. और another example वो देता है मॉर्फिक फील्ड की कि once spoken somewhere else, एक वर्ड कहीं और बोला गया दुनिया में, तो उसको एक और बंदा कहीं और लोकेशन में समझने याद करने की कोशिश कर रहा है, that becomes easy to learn. Now here is the two really cool examples जिसकी वो एक देता है example. Number one, doctor says कि उसने blood samples लिए several patients के, और क्या कहते हैं they were sick.
from different things, but that doctor was too experienced कि उसने कहा कि वो identify कर सकता है सिर्फ patient का blood sample देख के कि वो किस चीज से sick है, और फिर उन blood samples को उन्होंने store कर लिया, seal कर लिया ताकि contamination ना हो, और 2 years बाद उन patients के blood samples फिर दोबारा खोले, and physicians re-examined those patients के blood samples, and what they found कि अगर 2 साल पहले वो सिक थे और अब 2 साल बाद वो हेल्दी हैं, तो उनके ब्लड सैंपल भी से क्या कहते हैं, अगर पहले सिक थे और अब हेल्दी हैं तो सिक टू हेल्दी, जो उनकी करंट स्टेट है उसके हिसाब से उनका ब्लड सैंपल चेंज हो गया. सो देयर इज अ फील्ड दैट इज अनसीन, जो आपकी करंट आप जो हो और आपका जब भी जितना पुराना ब्लड सैंपल लिया गया था, देयर इज समथिंग इन बिटवीन जो एक दूसरे को लिंक कर रही है. दैट्स वियर्ड, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल. और फिर वो एक राइटर, एक और डॉक्टर की बात करता है. ही वाज अ जर्मनिक डॉक्टर, प्रीटी मच ओल्ड, 80 years old, बट उसने सेम एक्सपेरिमेंट किया था, बट वो उसने पेंडुलम के साथ किया था. ही यूज्ड टू टेक 1 drop ऑफ ब्लड फ्रॉम द पेशेंट फिंगर और उसको सोक कर देता था पेपर के ऊपर, और वो सेम ब्लड को थ्रू आउट पेशेंट ट्रीटमेंट यूज करता था. एंड ब्लड कंटिन्यू, सो इन दोनों का जो कंक्लूजन है वो क्या है कि ब्लड कंटिन्यूज टू चेंज इन अपीयरेंस अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंडीशन. एंड इसके बाद वो बात करता है कि रिमेंबर कि वो हाडो क्या था जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था. वो 3 चीजें हैं. हाडो इज वाइब्रेशन, हाडो इज रेजोनेंस एंड हाडो इज सिमिलैरिटी. अब वो ब्लड को हाडो इज वाइब्रेशन में एग्जांपल में समझा रहा है कि हाडो इज इक्वल टू वाइब्रेशन. इसका क्या मतलब है कि ऑल ह्यूमंस आर इन स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल कैन बी अंडरस्टूड बाय एग्जामिनिंग वाइब्रेशन ऑफ अ ब्लड सैंपल फ्रॉम अ पर्सन. और फिर वो बात करता है हाडो इज इक्वल टू रेजोनेंस. कैसे है कि ब्लड टेकन फ्रॉम वन पर्सन 2 साल पहले also remains in resonance with the person's today vibration, current 2023 vibration, and changing to match current status of blood flowing the veins now. और हाडो इस सिमिलैरिटी में वो ब्लड को कैसे पुट करता है कि लेट्स टेक हाडो में हर चीज माइक्रो एंड मैक्रो वर्जन है, तो दीज रेजोनेट विद ईच अदर. जो माइक्रो वर्जन है और जो मैक्रो वर्जन है एक दूसरे से लिंक है. सो फॉर एग्जांपल जर्मनी डॉक्टर की जो एग्जांपल है पेंडुलम वाली, 1 drop ऑफ ब्लड फ्रॉम द फिंगर, वो कहते हैं ब्लड सैंपल माइक्रो वर्जन है हमारी बॉडी का जो कि चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द मैक्रो वर्जन. फॉर एग्जांपल आई डोंट नो बट लेट्स पुट एन इंटरप्रिटेशन, मे बी हम आलमे अरवा से आए हैं, दैट इज अ मैक्रो वर्जन. व्हाट वुड बी योर इंटरप्रिटेशन? The last one is the Harold Saxton Burr. He was anatomy professor Yale University से, and his basic foundation उसने science of Hado की डाली है. He was thinking on mysteries of life, just basic science explain करने में field है. तो उसने का कुछ है जो नजर नहीं आ रहा और उसने उसको नाम दिया लाइफ फील्ड है, एल फील्ड है. All cells in our bodies replaced over 6 months period. Why do we keep being reborn after 6 months? What's going on? फिर वो कहता है जिस तरह पुडिंग आप बनाते हैं या जेली बनाते हैं एक सैंपल के अंदर, मोल्ड के अंदर, तो कुछ है जो उसको शेप दे रही है. हम सोचते हैं नहीं सोचते उसके बारे में, दैट्स अनदर क्वेश्चन. तो उसने कहा अगर कोई फील्ड है, अनसीन फील्ड है और उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड इन नेचर है तो उसको मेजर किया जा सकता है. फिर उसने डिवाइस बनाई जो कि वोल्टेज इंडिकेटर प्लस इलेक्ट्रोड थी, और उसने बड़ी मजे की EI वाली चीज ऑब्जर्व की कि जो डिप्रेस लोग हैं उनका वोल्टेज बहुत लो था, और जो ब्लिसफुल अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी पीपल थे उनका वोल्टेज बहुत हाई था. एंड देन ही टॉक्स अबाउट, राइटर टॉक्स अबाउट कि उसे लगता है जो उसकी MRA मशीन थी उसकी जो फाउंडेशन है वो क्या कहते हैं इन साइंटिस्ट ने रखी थी, हैरोल्ड सेक्सटन बर्र ने. और राइटर यूज्ड टू एनालाइज द वाइब्रेशन जो उस MRA मशीन से थी. सो द पॉइंट इज जो दैट इज रिलेटेड विद EI कि जब भी आपके कोई बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन हो रही है, सो बी श्योर देयर इज ऑलवेज अ इमोशनल वाइब्रेशन जो कि इन्वॉल्व है. और ये उसकी बुक है, अगर आप उसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ब्लूप्रिंट फॉर इमॉर्टैलिटी. So the writer writes about him in his book Blueprint for Immortality, The Electric Patterns of Life. Dr. Burr wrote that someday it will be possible to pinpoint even the emotions of people using millivolts. So this is pretty much the ABC content जो chapter 4 को divide किया है, and this is the most interesting जो उसने end किया है, very relevant. और इसके different meanings निकलेंगे किसी के लिए if you think subjectively, so just take it that way. It was a good lines तो मैंने exactly as it is रखी है. So anyone who has worked very much with vibration has noticed at least one thing. The soul is affected by anything and it affects everything. Both your body and the things that go around you and even the world that you live in is created by your soul.
It's something that I have observed, any writer has observed over and over, and there is so much power within you. What is it talking about? वो हमारी एनर्जी कहाँ है और हम क्यों अपने जो लोएस्ट चक्रा रूट पॉइंट है जो रेड कलर में है हम उसमें क्यों फंसे हुए हैं? That's my interpretation. So how would you think? आपके दिमाग में और एक फील्ड्स आती हैं जो हमारे इर्द गिर्द है, ये कौन सा नॉलेज है जो हमारे तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें नहीं दिया गया? What is that? क्वाड्रिवियम की आगे बात करेंगे और फिर the lines, perhaps we do live in a world of uncontrollable and unpredictable chaos, yani chaos and order. We really don't know what's going to happen from one moment to the next, but this chaos is also of your own creation. Chaos is brimming over with myriad amounts of energy. After all, before heaven and earth, before there was a universe moving in order, there was just one thing, chaos. यानी आपके ऊपर let's interpret it the way हमेशा एक side of coin नहीं रहेगी, दोनों times आएंगे. It's like आप उसको किस तरह utilize करते हैं. And the chaos is also of your own creation. Maybe the things that everything is created by your soul. You know, कि आपकी soul का effect है, हर चीज का उसके ऊपर है और वो बाहर. So it's a reversible reaction. बाहर अंदर. It's about your consciousness, mindfulness. आप हैं कि नहीं. And then he talks about, right about us, जो पढ़ने वाला है, सुनने वाला है. Do you feel lost right now or disappointed or hesitant? कौन सी A road लेनी है, B, X, Y, Z? Or do you feel weak? Return to yourself, to who you are here and now. Easy to say, but how would you interpret? To be honest. So when you get there, when you find yourself, whenever it is, wherever it is, you will discover yourself like a lotus flower in a full bloom, even in a muddy pond, beautiful and strong. So this is the conclusion of chapter 4. And now starts the crystal photography, जो इसके chapter 5 के epilogue वाले part में है. So I just wanted to give you another dimension. I'm not saying that this is the right, but just जब आप कोई crystal देखते हैं, कोई भी geometrical shape देखते हैं, कोई image देखते हैं, कुछ भी आपके दिमाग में कभी कोई geometry आती है कि नहीं आती? Hexagon ही क्यों? For example, water crystal की shape, there is circle, there is a dot, then there is a circle, then there is a square, pentagon, hexagon, so many more. अभी हम सिर्फ 2D पे बात कर रहे हैं. 3 dimension में आप mix करेंगे, 4 dimension में mix करेंगे, it will start getting complicated. So जो भी आगे आप photography देखें crystal की, उसमें जरा shapes देखें, आपको कौन सी नजर आती है? अंदर hollowness है या अंदर भी कोई shape बन रही है? This is the क्या कहते हैं snowflake का crystal या किसी और चीज का crystal था. So I just dotted how there is a hexagon, then there is a Star of David, and then there is a square, rectangle, circle, one dot, cross, and multi rectangles. So just done. And then quadrivium वाला part, आपने कभी quadrivium वाले way में देखा है कि किस तरह geometry अगर है, so geometry can be maybe expressed triangle को अगर आपने number में करना है, for example 2D में, so 3, और अगर आपने साउंड को एक्सप्रेस करना है नंबर के थ्रू तो वो टाइम में होगा, मे बी ज्योमेट्री वुड बी इन स्पेस. और जब आप कॉस्मोलॉजी लेंगे सो दैट मे बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर कुड बी इन स्पेस एंड टाइम. जस्ट सेइंग, व्हाट डू यू थिंक? कैसे है? बिकॉज जब आप तक साउंड वेव आ रही है, आप उसको न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स नंबर में चेंज कर सकते हैं. सो इज देयर अ लिंक? व्हाट डू यू थिंक? Okay, so let's start. This is the first example. Remember this shape और इसको crystals में ढूंढने की कोशिश करें. This is about spring and dam water कि किस तरह this was a mountain trail और राइटर ने जर्नी स्टार्ट की 1800 एल्टीट्यूड पे और फिर ऊपर से नीचे आते आते वाटर सैंपल्स लिए एंड आप उसमें देख सकते हैं हिज होल जर्नी कहाँ क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हुए, कहाँ जाके एंड हुए. फॉर एग्जांपल ये माउंटेन ट्रेल पे इट वाज अ बैम्बू लीफ जिसके ऊपर शबनम के कतरे पड़े हुए थे एंड दिस वाज अ यूनिक क्रिस्टल. नंबर 2, दिस वाज स्प्रिंग वाटर फुट ऑफ माउंटेन के अगेन द क्रिस्टल, यानी इधर लग रहा है लाइक इट्स इन अ प्रोसेस. आप अंदर स्टार ऑफ डेविड देख सकते हैं और ये जो बाइट क्रिस्टल्स निकले होते हैं आपको एंटीनेस की तरह लगते हैं कि किस तरह लगते हैं. एंड देन द थर्ड वन के जब स्ट्रीम वाटर जो लेक और स्ट्रीम वाटर वाला था, सो इधर अंदर हॉलोनेस है, ये डिफाइंड हेक्सागोन है, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर. एंड देन क्या कहते हैं, अब जब लेक से शिफ्टेड रिवर तो वो डिफॉर्म होने लग गया और फिर जब डैम तक रिवर आगे डैम वाटर गया तो टोटली शोइंग लाइक देयर isn't any momentum, क्रिस्टल भी ब्रेक हो गया और फिर जब डैम वाटर से आगे डाउनस्ट्रीम पहुंचा देन अगेन बैक.
सो जस्ट थिंक जब आप पानी पी रहे हैं यू नो कि आपके अंदर वाटर किस तरह जा रहा है। नंबर 2 एग्जांपल वाज फ्लोइंग रिवर जो नेचुरल है, और फिर उन्होंने किस तरह उसको लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट करके ब्लॉक किया और उसके क्रिस्टल के ऊपर क्या असर पड़ा। सो इट्स बेसिकली about the reclamation area जो मसनूई होता है, that's not natural। और इसका just थोड़ी सी definition कि land reclamation है क्या, usually known as reclamation and also known as landfill, वो वाला landfill नहीं जहाँ waste करते हैं dump। and this is the process of creating new land from oceans, seas, river beds or lake beds। the land reclaim with different names हैं, reclamation ground, landfill or these are examples के San Francisco Bay, these brown areas are reclamation area, ये natural नहीं है, ये artificially बनाए गए हैं। and same here in Hong Kong, these gray areas। now let's look at the crystals। so this was a Hanmyo river, और ये जो artificial इस bay बनाई गई है। so we can see कि जब river था तो इधर transparent था, diminish हो रहा है या भी process है बनने में वो चीज। remember the shapes, आप कौन सी shapes इधर identify कर सकते हैं। and जब upper reaches of river में गया है, so it's a breathtaking crystal, pretty much clear। फिर क्या कहते हैं, अब ये शहर में से गुजर रहा है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता यू नो डिमिनिश होने लग गया, हल्का डिफॉर्म में भी, और इधर जाके तो बिल्कुल ही डिफॉर्म हो गया जब ये आर्टिफिशियल इस हाईवे पे आया है। और जो पॉन्ड है आगे रिक्लेमेशन एरिया का, दिस आर्टिफिशियल जो इधर पानी जमा किया हुआ है उधर तो जो थोड़ा बहुत था वो भी चला गया। सो वाटर मूव्स अलोंग फ्रॉम पॉल्यूटेड टू नेचुरल, यू नो इट्स दैट। फिर थर्ड एग्जांपल में इट्स अबाउट द फूजी रिवर, और इसमें डिफरेंट डाउन स्ट्रीम्स हैं, अपर स्ट्रीम, डाउन मिडल स्ट्रीम एंड द डाउनस्ट्रीम। और किस तरह अगेन रिमेंबर द शेप्स, एंड अपस्ट्रीम में किस तरह क्रिस्टल है, इधर आगे किस तरह खत्म हो गया टोटली, और डाउनस्ट्रीम में थोड़ा सा बनना स्टार्ट हुआ है वो प्रोसीजर। एंड देन द जापान वाटरफॉल्स, डिफरेंट वाटरफॉल्स हैं जापान की, उधर का ये सैंपल है और उसका बन रहा है, खत्म हो रहा है, व्हाट डू यू थिंक। और इधर क्या कहते हैं, अगेन दिस इज अगेन अ स्प्रिंग वाटर, यहाँ इट्स फेमस फॉर दिस इज अ निगाटा प्रीफेक्चर, तो ये टाइनी लिटिल लाइक क्रिस्टल्स हैं, तो ये उसके हिसाब से कह रहा है कि ये राइटर को लगता है वो ही बन रहा है। इट्स बेसिकली दिस फायर फ्लाई, इसके लिए फेमस है एरिया, सो उसे लगता है वही चीज बन रही है उसके हिसाब से। एंड देन ही टॉक्स अबाउट द लेक वाटर, अगेन द लिटिल डिग्री ऑफ पोल्यूशन है इधर बट स्टिल इट्स वेल बैलेंस्ड। and Tokyo City Sumida River, so not clean enough to even form the crystal। so what do you think, हमारे इर्द गिर्द वाटर के बारे में क्या ख्याल है। और ये रेन वाटर है जापान में, दिस इज दिस एरिया टोकोरोजावा, जो 3 साल पहले जब ये लिया गया था तो उधर तो बिल्कुल कोई क्रिस्टल नहीं था, एंड इट वाज टोक्यो का, इट वाज फेमस डाइऑक्सिन पॉल्यूटेड वेस्टम के लिए ये वाटर। फिर जो लोकल पीपल थे उन्होंने कोशिश की एंड क्लीन किया, एंड देन इट गॉट इम्प्रूव, और अब उधर क्रिस्टल्स बनते हैं। सो अगेन हॉलोनेस है नहीं है, और ये बाहर एंटीनास हैं, मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक। सो दीज आर फ्लावर्स, अगेन नेचर, फ्लावर की पिक्चर लगाई बीकर के ऊपर, सो चेरी ब्लॉसम का क्रिस्टल, फिर लोटस फ्लावर का क्रिस्टल, ये पिक्चर लगाई फॉक्स की इन लश फॉरेस्ट में, तो उसको वो इंटरप्रेट कर रहा है कि मे बी दैट फॉक्स इज लिटिल सैड बट इट्स अ ब्राइट शार्प क्रिस्टल। एंड देन ही टॉक्स अबाउट द ऑटम लीव्स, ये पिक्चर भी लगाई गई वाटर बीकर के ऊपर, सैंपल के ऊपर, और ये क्रिस्टल बना, एंड दिस ये थोड़ा सा maybe mimicking the shape of a tree, or maybe mimicking the shapes of the leaves of the tree। and then he talks about the ancient tree, and that is making this, and there is a little hollowness in the center, और ये one flower है, जब उसकी पिक्चर लगाई तो ये फ्लावर बना, और जब उस फ्लावर की वाइब्रेशंस क्या कहते हैं फ्लावर लगाया उस सैंपल के साथ तो ये क्रिस्टल बना। सो यू कैन सी कितनी वैरायटी है। And these are the religions, Islam ka, this one, the Christianity ka, there is a little bit, थोड़ी सी geometry हिल गई है। Buddhism में there is one thing, if you notice, central जो है आपका hollow है, what is it showing? He thinks the reincarnation process। Judaism का crystal, double one, and the Hinduism का crystal again। So just keep remembering the geometry। This is the EM जो हमने पढ़ा था last time। It's basically EM is what
It's basically जो हमने पढ़ा था, it's an effective microorganism and liquid form of a bacteria के लें या liquid organic bacteria के लें, और इसके फायदे थे, चाहे आप इसे वाटर में डालें तो क्या कहते हैं, ये आप उस वाटर को ड्रिंकेबल बना देता है, आपका डाइऑक्सिन खत्म कर देता है लेक्स और आइलैंड्स के वाटर से जो साइड पे है, या पोल्यूटेड वाटर है उसको क्लीन कर देता है, या आपके जो वाटरवेज हैं स्ट्रीट में से छोटे छोटे गुजर रहे हैं उसको भी क्लीन कर देता है। और जब आप इसे सॉइल में डालते हैं तो आपकी सॉइल इनरिच होती है, आपकी वेजिटेबल्स फ्रूट्स की क्वालिटी बेहतर होती है, और लॉन्ग टाइम में आपके सॉइल के ऊपर इसके कॉन्स भी नहीं है। और ओपोजिट हमें पता है साइंस ने हमें क्या दिया है, क्लोरीन डाल लें वाटर में, नो क्रिस्टल्स, केमिकल सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स डाल लें, टोटली नेचर के खिलाफ। और फूड में भी ये आपको पता है, आप घर पे अगर दही बनाते हैं, योगर्ट और सोया सॉस या बीन पास्ता तो वो भी ईएम वाली चीज है, एक तरह से फर्मेंटेशन हो रही है। So that is EM. ये उसका इंट्रोडक्शन। सो EM के बारे में वो कह रहा है कि we tested effective microorganism being promoted in Japan, which has the ability to clean the environment along with flower essence and aroma oils. So EM is made from a microorganism good for environment, health, soil, water, food. Just a small amount water लिया गया और उसमें dilute किया गया, और फिर ये water simple water से ज़्यादा energetic crystal लग रहा है। And this was all the history जो हमने EM की पहले पढ़ी थी। So it's basically the power to heal. Basically the power to heal is power of light. And these are the flowers, उनकी vibration से जो crystals बने, कहीं hexagon sharp है center में, कहीं आपको star of David नजर आ रहा है, कहीं आपको again, so what will you say? Again, these are all flower essences. And this is a valerian flower, elderflower. So there is something unique about every flower, you know. Maybe next time we take a walk, so we might remember this. This is aroma oil, जिसको वो कह रहे हैं कि you know this transfer to water using the vibration device, और crystal बिल्कुल flower की shape के ये चीज बन रही है। And this was the last flower, fennel flower, और उसकी भी shape आप देख सकते हैं। And last one was love and thank you. 3 different languages में कहा गया है, but there is something you know unique, कुछ similarity आपको है, English, Germanic language, Japanese language. Love, thank you have the same vibration, yes or no? No matter what language it is. Yani this is something that is understood by everyone in the world. Everything begins and ends with love and thank you. You know, हम हर relationship को इस तरह deal कर सकते हैं, अपना EI line जो आपने EI से learn किया है। So the question is, wouldn't it be wonderful to live each day with this beauty of this crystal within your heart? So it's a golden question. And Jazakallah khair. Thank you so much for giving your time and energy.